0.01 into 10 to the power 9 plus 7 16 16 और 23 ना 0.001 k into 10 to the power 1.2 into 10 to the power एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? क्या पढ़ते हो भाई आप? वो जो थियरिकल पढ़ा है उसका आपको यूनिट नहीं पता है क्या? आपने पढ़ा तो फिर एक्टिविटी का यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर इट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसको बैक्वेरल बोलते हैं या फिर इसको क्यूरी बोलते हैं। क्यूरी का कन्वर्जन आता है। 1 क्यूरी इज हाउ मेनी बैक्वेरल और हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये लिखाया होगा आपको। નથી લખાવું તો મને યાદ કરાવજો લખાઈ દઉં। Are you clear with this? Check with the answer. बराबर। Then एग्जाम्पल 13.5 बाकी है ना? हाँ चलिए बोलिए। तू बोलिस बोल बेटा। Then will be n 0 by this much part is remain undecayed. That means 3 and 0 by 4 will be decayed. बराबर है? उन्होंने तो डायरेक्ट लिखा होगा। और अगर इसमें क्वेश्चन पूछा होता तो व्हाट इज द पार्ट व्हिच इज डिकेड, कितना डिके हो गया? गुड। नाउ वी गो फॉर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। 13.1 2 3 4 5 हो गया, इतना आपने मेरे को बोला बराबर ना? वी टेक 13.6। Write nuclear reaction equation for alpha decay of radium. एक मिनट, रेडियम એનું એટોમિક માસ અને એટોમિક નંબર? Atomic number 88 and mass 25. 26 અને આમાંથી अल्फा डीके કરવાનો। अल्फा डीके होगा इसमें से तो दिस z will decrease by હા એટલે 2 થી ડિક્રીઝ થાય, નામ નથી આવડતું મને। અને 226 માંથી 4 डिक्रीज થાય। 220 इसका नाम होगा जो भी होगा वो 2He, दैट इज अल्फा। ये अल्फा पार्टिकल मिल गया प्लस सम क्यू वैल्यू। चलो नेक्स्ट। Alpha decay of P 242 94. z will decrease by એટલે 92। આનું નામ આવડે યુરેનિયમ। 242 में से 4 निकालो, 2He4। दिस इज अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू वैल्यू। चलो नेक्स्ट। Beta decay of phosphorus 52। ये तो आवड़ेला। बीटा माइनस माइनस बीटा એટલે -1E0। बीटा माइनस એટલે इलेक्ट्रॉन। जब बीटा डीके होता है तो z का वैल्यू 1 से इंक्रीज होता है तो बैलेंस થાય ને, तो विल बी 16 सल्फर આવશે। 32 16 માંથી એક ગયું એટલે 15 આવી ગયું। ओके
beta minus decay of Bi. बिस्मथ 210 and 283 बीटा माइनस डीके था એટલે z will increase by 1 84 આવશે આનું બી નામ નહીં આવડતું 210 minus 1 E0 बीटा minus डीके plus Q value देगा કે છે કોઈ બાકી beta plus decay of C612 11. 11 આપે છે इसका बीटा प्लस डीके बीटा प्लस એટલે z 1 થી ડિક્રીઝ થાય બોરોન મળશે ને and बीटा प्लस એટલે પ્લસ 1 E0 આને શું કહેવાય ખબર છે આને -1 E0 એટલે ઇલેક્ટ્રોન ધેટ ઇઝ ઓકે આને શું કહેવાય પોઝિટ્રોન કહેવાય એનું એન્ટી પાર્ટિકલ હોય ઇલેક્ટ્રોન चलो हो गया कि कोई बाकी है Beta plus decay of T. टीई TC 9743. 243 હશે 97. ओके ओके चलो बीटा प्लस सेम दिस हैज टू बी डिक्रीज बाय 1 42 नाम जे भी हो चलिए पति गया नाम तो मैं हो भी Electron capture of xenon. इलेक्ट्रॉन कैप्चर अंडरलाइन कर दो xenon એટલે c બરાબર વેલ્યુ 120 54 120 એને इलेक्ट्रॉन कैप्चर કર્યું એટલે -1 E0 कैप्चर किया तो बैलेंस करना है तो 54 में से एक निकाल दो 53 થાય ને આપણે તો બેલેન્સ કરવાનું આ તો તમે કેમિસ્ટ્રીમાં બી ભણ્યા 54 - 1 this is 124 છે ને કે 120 જ હતું 120. ઓકે 120 આ નામ જે બી હોય આ કેપ્ચર થાય છે એટલે આમાં ક્યુ વેલ્યુ માઈનસ આવે કારણ કે એનર્જી આપવી પડે તમારે કેપ્ચર કરાવવા બરાબર એ તો ઈઝી ક્યુ વેલ્યુ હા ગણવી હોય તો ગણી આપણે ના એ પછી ગણીને પછી પ્લસ માઇનસ લેવા બાકી બધામાં તો પ્લસ જ લખવાનું લખવાનું હોય ત્યારે પ્લસ માઇનસ માં પ્લસ જ લખાય આમે તું તો લખે જ છે ને ચાલો એક્ઝામ્પલ નંબર એક્સરસાઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 13 point Radioactive isotope has a half-life of T years. half life of t years How long will it take the activity to reduce to a 3.125%? एक मिनट एक्टिविटी टू रिड्यूस 3.125 B 1% of its original value. and b 1% of its original value एक बार इसका एक्टिविटी 3.125 हो जाना चाहिए रिड्यूस 3.125% એવું કીધું છે how long it will take to reduce its activity by word use કર્યો છે ને કે 2 use કર્યો 2 તો પછી 3.125 by use કર્યો તો 100 માંથી 3.12 माइनस करना और एक बार इसको रिड्यूस करके लाना है 1% बराबर है तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन we want to reduce this r by r0 to b r का हमें फॉर्मूला पड़ा r is r0 e raised to minus हाफ लाइफ का वैल्यू t दिया है we want this r by r0 to be 3.12 इसके लिए कितना टाइम लगेगा इसको मैं t1 बोल देता हूं और इसको मैं t2 बोल देता हूं फर्स्ट टाइम हमें कितना चाहिए इट इज 3.125% છે તો 3.125 बाय e raised to minus lambda t1 लैम्ब्डा की जगह पे हम ऐसा डाल सकते हैं 0.693 अपॉन हाफ लाइफ दिया है टी दीधु છે कैपिटल टी છે કે स्मॉल टी છે ओके इनटू t1 આમાં t1 ફાઇન્ડ કરવાનું એટલે ઈ કાઢવું પડે એટલે આની વેલ્યુ કાઢવી પડે नहीं हम 100 डिवाइड बाय 3.125 करो ना મને એવું ચેક કરવું છે
100 by 3.125 करो तो 0. It will be easier. Why it will be easier? I tell you. 32 can be written as 2 raised to 5. बराबर. So 32 है तो इसको मैं 1 by 2 raised to 5 लिख सकता हूँ. वो 2 raised to 5 को ऊपर ले लूँ तो प्लस हो जाएगा. Do you agree with me? So it will be e raised to minus 0.693 upon t into t1. अब पावर माइनस થઈ જશે ऊपर આવશે. बेस अलग अलग है लेकिन पावर को प्लस कर सकते हो. अगर ये t फाइंड करना है तो e निकालना पड़ेगा. e निकालने के लिए यहाँ पे log e बेस देना पड़ेगा. तो फिर ये स्टेप ऐसा हो जाएगा 2.303 पावर આગળ आई जाए 5 log is equal to 0.693 upon of t into. एग्री विथ दिस. एक स्टेप में रिड्यूस કર્યું. ખરેખર અહીંયા હવે 5 log e base 2 પછી એને તમારે કન્વર્ટ કરવાનું 2.3 તો મેં જોડે કરી દીધું. બસ अभी तो इसमें से t1 फाइंड करना है. So this t1 can be written as 2.303 into 5 log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 સામેથી 0.693 નીચે જતું રહેશે અને આ t ઉપર જતું રહેશે. બરાબર. 0.3010 into 2.303 કરો એટલે 0.693 આવે. આ 0.693 આ કેન્સલ થઈ ગયું એટલે 5t t યર્સ માં આપ્યું છે તો પછી એમ યર્સ લેવું પડે. गेटिंग. सेकंड आप सॉल्व करवाइए. ऑनलाइन માંથી કોઈ વોલન્ટિયર સોલ્વ કરાવે તો બી ચાલે, ઓફલાइन માંથી કોઈ કરાવે તો બી ચાલે. એના માટે બહુ હિંમત જોઈએ. એના માટે હિંમત માટે આવડવું જોઈએ. बराबर है. चलो r by r0 अभी सेकंड केस में फॉर्मूला तो वही लगेगा e माइनस लेमड़ा. अभी t2 हो जाएगा. बताइए क्या लूं अभी r by r0 कितना परसेंट करना है? 1% એટલે 1 by this is minus 0.693 upon અને t2 ફાઇન્ડ કરો. હવે શું કરીએ આમાં? આમાં તો થઈ ગયું તું સેટ 2 raised to 5 આમાં અને 10 raised to 2 લખાય ને. પાવર ના ટર્મ માં લાવો ને એટલે ઈઝી થઈ જાય. બાકી પેલું તમારે log ને એન્ટી log ને બધું આન તે ને બધું કરવું પડશે એટલા માટે. This can be written as 10 raised to तो ऊपर आवे तो 10 raised to e raised to minus 0.693 upon t t2 माइनस माइनस तो प्लस हो गया. 2.303 log 2 આગળ થી પાવર આગળ આવશે ને 2 log 10 is equal to 0.693 upon of t into. So this will be t2 will be 2.303 2 log 10 तो 1 થાય બરાબર upon 0.693 into t 6.64 t बराबर years. आंसर चेक कर दो ना व्यू. Check the answers. Okay. But this I show you the easiest method. अगर તમે ભૂલી જાઓ તો પછી આને તમે log anti log એ કરીને કરો આન્સર તો આવી જશે. પણ I show you the easiest method by with the power. Even કોઈને આવું કરવું હોય તો બી ચાલે. r by r0 या फिर n by n0 कोई भी लो तो इसका फॉर्मूला होता है 1 by 2 raised to t upon of. આનાથી ફાઇન્ડ કરશો તો બી ચાલશે. ચોઇસ તમારી. ઇઝીએસ્ટ વે થી જવાનું. નેક્સ્ટ देखो ना 13.8 थोड़ो लेंथी છે એ નહીં થાય. લખો ને ચલો. Is this clear to all of you? આના ક્વેશ્ચન્સ એટલા ઈઝી. 13 બે ના वीडियो बंद થઈ ગયા છે ભાઈ. कि आप यहाँ पे एक बार कर लोगे तो भी हो जाएगा आराम से. આ ચેપ્ટર નું બર્ડન તમને ઓછું મળે 12 અને 13 નું. कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स है, थियोरेटिकल है.
હવે થોડું ભણો હા. Then I am taking 13. ઓલા પેલું મેં તમને 1 ક્યુરી ની વેલ્યુ લખવાનું કીધું. देखिए 1 ક્યુરી, ક્યુરી ને CI થી ડિનોટ કરાય. 1 CI, CI એટલે ક્યુરી is equal to 3.7 into 10 to the power 10. બેકવેરલ લખો તો બી ચાલે, એટલે BQ લખો તો બી ચાલે, और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लखो तो भी चाले. 3.7 into 10 to the power 10. BQ એટલે બેકવેરલ. કાલે પતી જશે. આ રિયલ વાળા છે. એટલે તમે કીધું ને આ બધા રિયલ વાળા.
કમ્પ્લીટેડ બાકી છે? હેલો સર. બોલો. સર અહીંયા જે આ ફોર્મ્યુલા છે આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R0 એ એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મમાં છે, તો સર એને લોગમાં કન્વર્ટ કરીને લોગની ફોર્મ્યુલા લખાય? હા કરાય કરાય. હા તો સર પછી આવું ડાયરેક્ટ જ એટલે થઈ જાય છે, લોગ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R/R0 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ લેમડા ટી અપોન 2.303, તો પછી ઈઝી થઈ જાય છે સોલ્વ કરવાનું એમાં. યસ એક્ઝેક્ટલી. કોને કીધું મને? ઉર્વિક સર. ઓકે ઉર્વિકભાઈ, बराबर है. थैंक यू. ये अच्छा मेथड है. आई थिंक सो दैट विल बी बेटर. પણ એવું યાદ આવવું તો જરૂરી છે, અધરવાઇઝ યુ કેન ગો બાય ધેટ મેથડ. એવું કહે છે કે r/r0 is e to minus lambda t1 છે ને, પહેલેથી log આપી દો એટલે log r/r0 is e to minus lambda t1 upon 2.303 થઈ જાય, પછી તમે વેલ્યુ રાખી શકો.
Completed. શું થયું? ખોવાઈ જાય? ચલો then 13.8 આવશે ને? ઓકે, તો પેલો મોહેન્જો દડો વાળો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, હું રીડ કરાવજો, મજા આવશે. એ મૂવી વાળો નહીં લાગે? એક second. શ્રવણ ને સરમન યાદ રહે. Example number exercise question number 13.8. चलो, volunteer to read it. તો શાંતિથી વાંચજે. કોણ રીડ કરે છે? તું કરે છે? The normal activity of killing carbon containing matter is found to be about 50 kg per minute. એક મિનિટ. यार नॉर्मल बीइंग, नॉर्मल लिविंग थिंग कोई भी હોય એની જે એક્ટિવિટી હોય એમાં કાર્બન હોય. बिकॉज ऑफ दैट कार्बन और एक्टिविटी अगर आप अभी भी फाइंड करते हैं अपने रेडियो एक्टिविटी, इट विल बी अराउंड 15 डीके पर. तो इसको हम बोल देते इनिशियल एक्टिविटी 15 डीके पर मिनट. मिनट આપ્યું છે, ધ્યાન રાખો. इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी. For every gram of carbon, this activity arises from the small proportion of radioactive carbon present with the stable carbon atom. When the એ કયા કાર્બન ના લીધે છે? 6C14 છે અને એનું સ્ટેબલ આઇસોટોપ કયું કીધું? હા, when the organism is dead, its interaction with the atmosphere which maintains the above initial activity and its activity begins to drop. एक मिनट. नॉर्मल लिविंग बीइंग होता है, लिविंग थिंग है, तो उसका एक्टिविटी कार्बन 6C14 की वजह से 1 ग्राम कार्बन के लिए 15 डीके पर मिनट मिलता है. बराबर. जब वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, फिर उसका जब एक्टिविटी फाइंड करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, उसका एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन होता है तो थोड़ा कार्बन निकल जाता है वगैरह, जो भी प्रोसेस होता है उसकी वजह से ये एक्टिविटी फॉल हो जाता है, कम हो जाता है. वो एक्टिविटी कितना फॉल हुआ है उससे ये पता चलता है कि वो जो डेड बॉडी है वो कितना पुराना है. दैट हाउ दे आर फाइंडिंग द एज. मोहेंजोदड़ो कितनु जूनू छे कि पर्टिकुलर कोई भी ये पिरामिड्स है वो कितने पुराने हैं, वो एक्टिविटी फाइंड करने के लिए, वो जो टाइम फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं. बराबर. ये पेला पुरातत्व विभाग वाला के ने, दे आर यूजिंग दिस मेथड. दे आर यूजिंग दिस
इंटायर थिंग। ये मेथड है कि उससे पता चल जाता है। यस, From the note comes like 5,730 years. एक मिनट, हाफ लाइफ लिखना पड़ेगा। हाफ लाइफ इज 5,730 years, बराबर ना? 30 years of carbon and the measured activity, the age of specimen can be approximately estimated. हाँ, एज ऑफ द स्पेसिमेन कैन बी एस्टिमेटेड, वो हम फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। This is the principle of carbon dating used for archaeology. Suppose आर्कियोलॉजी वाला यूज करे, पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी वाला यूज करे। suppose a specimen of Mohenjo-daro gives an activity of 90 kPa. एक मिनट, मोहनजोदड़ो में से सैंपल लिया और उसका जो एक्टिविटी मिला वो 9 डीके पर मिनट मिला, तो मोहनजोदड़ो का एज कितना होगा वो हमें फाइंड करने के लिए बोला होगा। मतलब ये कितना जूनू सैंपल से फाइंड करवाना है। तो बस आपके पास इनिशियल एक्टिविटी है, फाइनल एक्टिविटी है, आपके पास हाफ लाइफ है और आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के ऐसा लगता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन डेटा कलेक्ट करने जाओगे तो 4 चीज ही है। इनिशियल एक्टिविटी दैट इट कैन हैव, फाइनल एक्टिविटी जो सैंपल में से मिला है उसका हाफ लाइफ पता है, वो कितने टाइम पुराना सैंपल होगा, मतलब मोहनजोदड़ो कितने साल पुराना होगा, उसका एज कितना होगा, ये आपको मिल जाएगा। बट फॉर दैट बीइंग इट मस्ट बी इन अ सेम यूनिट सिस्टम। ये मिनट्स में है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू, तो पहला तो आने सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। पहला फार्मूला डिसाइड कर ले, वी कैन यूज व्हिच फार्मूला टू सॉल्व दिस। e raised to minus lambda, चलिए r by r0 is equal to e raised to minus, इसमें से एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन होना चाहिए, एक से ज्यादा अननोन हो गए तो मैथमेटिक्स बोलता है वो सॉल्व नहीं कर पाते हम। r is given, r0 is given, lambda, तो lambda का हम ये 0.693 अपना हाफ लाइफ कर सकते हैं, तो टाइम मिल जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का रेशियो आ रहा है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। r is upon, you need not to convert a unit because already they are in a dk per minute. આવું બતાવવાનું, this is dk per, this is also dk per, this can be written as, ये तो कैंसिल हो जाएगा, e raised to minus 0.693 upon half life into value છેલ્લે રાખીશું, this is 3 3s and this is 3 5s, बराबर है। इसको क्या करेंगे, अभी तो माइनस में आई जैसे, व्हाट शुड वी डू, इसको उल्टा कर दे तो चलेगा, 3/5 है तो 5/3 कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, गेटिंग। सो कैन आई से दिस इज 5/3 इज इक्वल टू e raised to 0.693 अपॉन ऑफ हाफ लाइफ इनटू, अभी तो ये e निकालना है तो 2.303 log 5/3 is equal to 0.693 upon half life into t। आप पहले 5/3 करिए, कितना आता है, उसका log फाइंड कर दिए, कैलकुलेटर थी log फाइंड करता। ऑनलाइन में से भी कोई आंसर बताएगा तो चलेगा इसका, खाली તમે log 5/3 નો આન્સર બતાવો ને, જેને ના આવડતું એવું कर દેવાનું, log 5 minus log 3 આવું कर दो, 0.2218 फाइनल, ओके। और इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट ચાલશે ને, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ इनटू, मैं हाफ लाइफ चेक સુધી રાખ્યું જ નથી, હવે રાખી દઉં છું। सो t इज इक्वल टू 0.51, हाफ लाइफ 57, हाँ तो अभी आंसर आएगा वो इयर्स में आएगा, अपॉन 0.693, 42, is it? Yes, sir.
યર્સ 4216 વર્ષ પુરાનું હશે મોહેન્જો-દડો. ચેક कीजिए आंसर 422 आई 7 वर्ष तो चाल 4216 साल पुराना होगा ये मोहनजोदड़ो. बराबर है. चलो देन 13.9 एक થઈ જશે. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. चलिए बोलिए फटाफट. obtain the amount of zero cobalt necessary to provide a radioactive source of 8 रेडियोएक्टिविटी ऑफ 8 मिलीक्यूरी. CI એટલે ક્યુરી થાય. the બરાબર. half life of cobalt is 5.3 years. 5.3 years. हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 27. इसका अमाउंट मतलब मास फाइंड करना है. हमारे पास एक्टिविटी है, टाइम पीरियड है, तो पहले हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेते हैं. कितने नंबर ऑफ एटम्स से वो एक्टिविटी दे रहे हैं, फिर उसको हम कंपेयर कर देंगे ये 27 कोबाल्ट 60 के साथ. 8 मिली क्यूरी. अभी मैंने कन्वर्जन बताया. मिली का 10 टू द पावर -3 और क्यूरी का 3.7 इंटू 10 टू द पावर. सॉल्व कीजिए. 31 इंटू 10 टू द पावर 7. अभी ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में आ गया. इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में. इसका भी आपको बताया 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7. बराबर. अभी फाइंड कर लीजिए. R इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू n. लेमड़ा की जगह पे हम डाल सकते हैं 0.693 अपॉन ऑफ हाफ लाइफ इंटू n. n मिल जाएगा आपको R इंटू हाफ लाइफ अपॉन 0.693. एक्टिविटी आया 29.6 इंटू 10 टू द पावर 7. हाफ लाइफ इज 16.6 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 0.693 into 10 to the power 14 એટલે 7.09 और 7.1 into 10 to the power 16 લખું તો ચાલે. These are the number of atoms. हमें एटम्स नहीं पूछा, हमें मास पूछा है. मास के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर 6.022 into 10 to the power 23 एटम, तो मास कितना कोबाल्ट है ना 60 ग्राम. हमें कितने एटम्स के लिए फाइंड करना है 7.1 into 10 to the power 16 एटम्स के लिए कितना मास. तो मास विल बी ग्राम में आंसर आएगा 60 into 7.1 into 10 to the power 16 सॉरी કેટલું છે 7070 into 10 to the power आंसर जो एक बार 7 into 10 to the power -6 ग्राम जो आंसर આવે છે 7.16 બરાબર. है
Is this clear to all of you? So 13.9 was the last one. Now remaining will complete tomorrow. और वो बाकी का fission fusion का कुछ theory है वो भी आपको कल complete करवा के खत्म कर देंगे. Assignment के आप कितने क्वेश्चन से एक बार नंबर देख लो. If you are having that with you. कितना है जो 40. તો તમે કામ કરો આજે જઈને જેટલા થાય એટલા જોઈ લો બાકીના ડાઉટ છે કાલે પૂછી લો તો કાલે સવારે આ જેટલા ન્યુમેરિકલ્સ બાકી છે અને થિયરી એવા થોડા હશે તો એસાઇનમેન્ટ ના કરશું પછી બપોરે એક એક્સ્ટ્રા સેશન રાખી દે તો પતી જાય બરાબર ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से जिन लोगों का हो गया है कंप्लीट दे कैन लीव all of you have completed I can end the meeting okay completed okay so then tomorrow as I told you we will have a physics lecture from 8 to 11:15 you will be provided with a break of 15 minutes in between બરાબર okay then